Dear world, I do not seek special reservations. If only I could change the spiteful perceptions. And this initiative is a small effort in that direction. And with that, let me introduce our two guests, very renowned guests today. First, please welcome Seema ji, who is an advocate and a legal advisor in Delhi who handled the Nirbhaya case as well. Welcome, Seema ji. Seema ji, can you hear me? Yes, thank you so much. Thank you so much, Stalin. And we also have Jas Uppal, a renowned attorney in the UK who worked on Sarabjit's case as well. She is working on a lot of human rights issues and issues concerning women as well. A very warm welcome, Jas, to the show. Thank you very much for inviting me, Sneha. So, just let me start off with you. We are aware that you are an attorney in the UK, but we would like to know more about your inspiration that drove you to take part in such activities and choose this as a profession wherein you can work around the issues concerning women and their rights. Thank you. I think that was quite straightforward. At school, I decided that's what I wanted to do when it came to choosing subjects. And I suppose I was inspired by, I admit it, by programs, school television programs about lawyers, what they do, what they work. And I had quite, I suppose now looking back, a quite naive attitude that it was to help people. But the realities of work soon make you realise it's a lot more than that. And but in the pure sense, that was my aim in providing access to justice or helping people trying to get justice. And I think there was awareness. There was quite a few political things happening in the UK at the time on racism, discrimination, immigration. And I think that formulated my attitude and wanting to persevere as a career goal to get into the legal profession. That's good. Thanks a lot for sharing that with us. सीमा जी, आप आज एक रिनाउंड लॉयर हैं, आपने निर्भया केस हैंडल किया है, आज पूरा देश आपको जानता है। बट हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने बचपन में या अपने अपने इकोसिस्टम में ऐसा कुछ देखा या ऐसा क्या आपने एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से आपको प्रेरणा मिली इस डायरेक्शन में आने की, इस प्रोफेशन को चूज करके विमेन को हेल्प करने। स्नेहा जी, एक्चुअली मैं अगर भारत की बात करूं तो जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, अपनी अगर पर्सनल जर्नी की बात करूं तो हमारा जो स्मॉल विलेज है वहां पर फीमेल को, गर्ल्स चाइल्ड को पढ़ने का राइट नहीं था। मैं पढ़ना चाहती थी आगे, तो मेरे साथ मेरी फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो मेरा विलेज था वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, क्योंकि बॉयज को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा था बट गांव की कोई भी गर्ल को भेजा नहीं जा रहा था, क्योंकि वहां पर जो स्कूल था उसका करीब डिस्टेंस जो था वो 1 किलोमीटर था। लेकिन एक जो कहेंगे बेबी जो 4 और 6 ईयर का है, कोई भी वो कैसे वहां पर जा सकता है, और सिक्योरिटी सेफ्टी का भी इशू था। देन आफ्टर जब मेरा 8th कंप्लीट हुआ, 9th क्लास में एडमिशन के लिए एक पंचायत बैठा ली गई कि आपको तब परमिशन दी जाएगी जब वो पंचायत डिसाइड करेगी कि एज ए गर्ल मुझे पढ़ने का राइट है या नहीं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन मैं कंटिन्यू अपने बचपन से देख रही थी। हम भारत में 49% पॉपुलेशन है फीमेल की, बट हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक एजुकेशन, बेसिक फूड्स, बेसिक फ्रीडम, हम हर चीज से हमें डिप्राइव किया गया है। तो उसके में फाइट करते करते जब निर्भया केस हुआ तो ये मेरी अपनी खुद के साथ कमिटमेंट था, और उस बेटी निर्भया ज्योति के साथ भी कमिटमेंट था कि आखिर आपकी गलती क्या थी, आपके साथ ये क्राइम क्यों किया गया। इसके लिए अगर जुडिशियल प्रोसेस है और डेथ पेनल्टी पनिशमेंट है तो उसका एग्जीक्यूशन भी जुडिशरी को करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने फाइट किया। और निर्भया के जस्टिस की फाइट तो थी ही, बट साथ ही साथ नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड की जो फीमेल है
उनकी एक वॉइस थी कि एज ए फीमेल हम डिफरेंट नहीं है, एज ए डिफरेंट जेंडर हो जाने से हमारे बेसिक ह्यूमन राइट से हमें डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड का स्ट्रक्चर है वो मेल मेकिंग सोसाइटी है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। तो ये चीजें हमारे दिमाग में हमेशा से थी, जिसका मैंने निर्भया केस में जब हमें ये मौका लगा मिलने का, और जब उनके मैं पेरेंट्स से मिली, तो मैं देख रही हूँ कि जब ये क्राइम हुआ उस टाइम पर बहुत लोग उनके सपोर्ट में थे, बट उसके बाद भूल गए एज यूजुअल, जो कि हमेशा होता है। तो मुझे लगा कि इस परिवार का मुझे सपोर्ट देना चाहिए, उस बेटी के जस्टिस के लिए फाइट करना चाहिए, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत बड़ा था। और जिसकी परिणति है वो बाद में निर्भया के जो एक्यूज थे उनका कन्विक्शन जब हुआ, तो एक कहीं ना कहीं मैसेज दिया कि अगर हम फीमेल डिसाइड कर लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये प्रेरणा मुझे बचपन से ही, डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, प्रेरणा नहीं, एक पेन है इंडियन विमेन का, ये उस पेन से मुझे प्रेरणा मिली। यस सिस्टर जी। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, पेन से प्रेरणा मिली। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं, या सिचुएशंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर, दे आर नॉट कंड्यूसिव टू अस, इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एडवर्स सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस ही मटेरियलाइज कर लेते हैं। सीमा जी, आपने निर्भया केस के बारे में बात की। हम जितना आप कंफर्टेबल हो बताने के लिए, जितना आप उचित समझे, वी वुड जस्ट लाइक टू नो कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा निर्भया केस के साथ? कुछ ऐसी चीजें जो शेयर करने से शायद हमारे ऑडियंस को फायदा हो, उनके माइंडसेट में कुछ चेंज हो सके। अगर कहीं कुछ नेगेटिव है जो ठीक होना चाहिए, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। ड्यूरिंग निर्भया केस स्नेहा जी, जो मैंने इस केस में वर्क करते हुए 4-5 एंगल्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मैंने रीड आउट किया। मैंने एक्चुअल में समझा कि आखिर एक साइड कैंपेन चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विमेन राइट, विमेन के बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। हम भारत में फीमेल को एक देवी के रूप में पूजा कर रहे हैं कि वो भगवान है, वो गॉड है, उसको पूजा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये क्राइम क्यों हो रहा है? तो मैंने जो नोटिस किया, जितना समझ पाई, कि पैट्रियार्की माइंडसेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर पैट्रियार्की में फीमेल को आप सेकंड जेंडर की तरह ही ट्रीट करेंगे, जैसे कि सिमोन दा बोआ, जो फ्रांस की राइटर, उन्होंने कहा कि फीमेल को कभी भी फर्स्ट जेंडर नहीं माना गया। ये पूरे भारत की ही नहीं, हर जगह की बात है। लेकिन अगर हम भारत में देखें तो इन सारी चीजों को मैंने महसूस किया। अगर निर्भया केस मैंने अपने हाथ में लिया, तो उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जहां पर कि इस केस को फास्ट ट्रैक होना चाहिए था, 2 इयर्स तक ये केस पेंडिंग था, और मैं बार बार अगेन एंड अगेन मेंशनिंग करा रही थी कि ये मैटर हमारा लिस्ट हो जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहूंगी कि उनकी नेग्लिजेंसी नहीं, बट इतना सेंसिटिव वहां पर भी फीमेल के लिए नहीं है लोग। दूसरा, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल इश्यूज बनाती है इन सारे प्रॉब्लम्स को, बट उसका सॉल्यूशन उनके पास नहीं है, या वो करना नहीं चाहते हैं। तीसरा, मैंने महसूस किया कि जो एक्यूज्ड थे, इसमें 4 जो कन्विक्टेड थे, उन चारों कन्विक्टेड का माइंडसेट क्या था आफ्टर डेथ पनिशमेंट, जब उनसे उसको अवॉर्डेड किया गया ट्रायल कोर्ट से, उसके बावजूद भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि फीमेल के राइट जो हैं वो उनके घर की 4 दीवारी, उनका बॉर्डर्स है, वो अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनको खाना बनाना चाहिए, उनको ड्रेसेस नहीं पहनने चाहिए प्रॉपर, जो अपने चॉइस के जो भी ड्रेसेस पहने वो इंडियन ट्रेडिशनल वाले ही वेयर कर सकती हैं, उनको नाइट में नहीं जाना चाहिए। डेथ पेनाल्टी से अवॉर्डेड होने के बाद की ये स्टेटमेंट है, तो आप समझिए कि किस हद तक पैट्रियार्की में फीमेल को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइन किया गया है।
ये बहुत उसके बहुत बड़ी बात अलावा है सीमा यस जी। यस ये मेन जो चीज थी वो ये मैंने फेस की। माइंडसेट यस का एक बेसिक माइंडसेट का प्रॉब्लम है। सीमा जी, हम ये अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमें एक ब्रेक पर जाना होगा इस वक्त। सो सीमा जी, क्या क्या मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, ठीक है। सो हम यस एक ब्रेक यस पर श्योर जाएंगे। श्योर जी, तो हम जी एक ब्रेक पर जाएंगे अभी, एंड वील बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड टू MATV and Inspiring Indian Women present Nari to Narayani. Our responsibly sourced Botanica range is grown by nature, but the UK has lost 97% of its wildflower meadows. So Botanica by Airwick and WWF pledge to restore 20 million square feet of wildflower habitats in the UK. Join us and let's bring nature back. Botanica by Airwick. Meet Daisy, the teenager who loves hand-me-downs. That jacket from her older sister, and those jeans from her auntie. A scoop of Vanish whites in every wash gets rid of stains, odours, and helps keep whites from turning grey over time. Keeping clothes looking great, making those hand-me-downs easier to love. Clothes live longer with Vanish. Dear stranger, all my life, my goal was to cross the finish line alone. To look left, to look right, and see no one. But, dear stranger, with my family, my country, and all of you beside me, no one has to lose for all of us to win. Rise and shine, everyone. It's a beautiful day. We are here to help you every step of the way. You can achieve your goals. At Glasses Direct, try the glasses you like at home for free. Really try them on. Trust our qualified opticians to check the detail of each and every order. And right now, get 2 pairs from £16 or 2 designer pairs from £36 with lenses. Get your glasses your way at glassesdirect.co.uk. When it comes to beautifully crafted furniture for your home, for out-and-out value and quality, look no further than outandout.com. We offer the latest in contemporary designs from around the world, all at prices you'll love, with 2-man delivery direct to your door. Right now, enjoy 20% off our complete range when you quote TV deal on ordering. With over 200 items of furniture to choose from, we've got something to suit every home or living space, whatever the size. For out-and-out style, this modern Alba extendable dining set is a great choice. Or stand out from the crowd with this stunning Alpine high-gloss dining set. This Parquet Kensington sideboard in smoked oak is equally striking. And this retro-inspired Mabel sofa comes with a 30-day comfort trial. To claim your 20% discount using code TVDEAL, simply visit outandout.com. Ever wondered how it would feel to win People's Postcode Lottery? Well, now's your chance. In our September draw, £7.3 million will be shared by players in one lucky postcode, our biggest ever Postcode Millions prize. And with a prize pot of £18.8 million, there's more cash prizes to be won when you sign up before midnight on the 19th of August. Why let your neighbours have all the fun? Join in for a daily chance to win. Wanted, the bravest kids to discover the world with Paddington. Sign up today and every month your child will learn about the amazing animals, languages, games and food of a different country. Paddington will send them a wall map, postcards, stickers and the travel journal to track their adventure. And best of all, you'll be helping UNICEF keep children happy, healthy and safe. Just search Paddington's postcards or text MAP to 88600 to sign up today. Marmalade sandwiches not included.
You're a style icon. But fungus is ruining your look. You're an almost marathoner with full-blown athlete's foot. Feet deserve Scholl. With over 100 years of foot expertise, Scholl's range of products treat foot conditions and help prevent them from coming back. Key is here to answer all your questions on equity release. Which plan, for instance, is right for you? Key has a wide range of plans to suit different needs, and with competitive rates and options such as inheritance protection, we're sure to find the plan that's right for you. All Key's advice is completely free of charge, so use our free calculator to see how much you could release. Key, equity release that's right for you. You're a style icon. But fungus is ruining your look. You're an almost marathoner with full-blown athlete's foot. Feet deserve Scholl. With over 100 years of foot expertise, Scholl's range of products treat foot conditions and help prevent them from coming back. Wanted, the bravest kids to discover the world with Paddington. Sign up today and every month your child will learn about the amazing animals, languages, games and food of a different country. Paddington will send them a wall map, postcards, stickers and a travel journal to track their adventure. And best of all, you'll be helping UNICEF keep children happy, healthy and safe. Just search Paddington's postcards or text MAP to 88600 to sign up today. Marmalade sandwiches not included. Welcome back to Nari to Narayani, presented by Inspiring Indian Women and MAT. Just, we would like to know from you. It's been a very long time since we have gotten our independence, right? So I just want to know, are you happy with the way the judicial system has made progress in terms of the laws concerning women? In the UK, maybe you can share your experience from the UK perspective, the Asian women in the UK. Certainly. With the UK law, it hasn't come overnight. It's sort of evolved gradually. There's been a lot of cases where which had prompted the law changes and lobbying and involvement, direct involvement from women, drawing the matter to the attention of the courts to change that. So it's not an overnight experience. It has been gradual, organic. So there's not been major revolution, but it's been as women entered the workforce, there's problems or came to arise. For example, acquisition of maternity rights, changing the employment legislation so that the women are dealt with equally and in terms of pay and rights in the workplace and promotion and advancement. So that has been the major changes that have been happening in legislation, but it has evolved organically. It's not something that, and there's a lot more to do. So, for example, right to maternity leave, all that has progressed over time. There has been a lack of awareness of the support available to women. It has meant women creating a space for themselves. You can't always leave it to governments and other organisations or even the employer to create that. There has to be awareness. It's affects both men and women, and it's also acknowledging that we're not different species. Women are not different species. We're humans, and there are human rights, and they apply to both men and women. It's making it an equitable workplace or environment generally in society. So there's quite a lot of needs that still outstanding that need to be addressed, but it's going to be gradual, and it's recognising that we are equal. And I think if we start talking about just women, that in itself I don't find comfortable. I think it benefits men as well. So it's got to be an equal. As long as you're a human being, you qualify. So I think we need to look at it from both perspectives. There's a lot more to do. Don't get me wrong. It's not all sweetness and nice in the West or in the UK. Definitely. There's always room for improvement everywhere.
सीमा जी, Absolutely. आप इंडियन कंटेक्स्ट में थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर कीजिए। हम अब अपनी आज़ादी का 75वां 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, the 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन दैट वी आर अबाउट सेलिब्रेट नाउ और डू नाउ। तो आपको क्या लगता है, क्या जुडिशियल सिस्टम पैरेलली ग्रो कर रहा है विमेन के कंटेक्स्ट में, इन द सेंस द लॉज जो भी विमेन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उसमें, या हम कहीं लैग कर रहे हैं उसमें? डेफिनेटली हम लैग कर रहे हैं, क्योंकि जिसका कारण क्लियर है, क्योंकि जो भी क्राइम रेट है, क्राइम का रेशियो है, वो बहुत ज्यादा है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। और कन्विक्शन रेट कम होना ही ये अपने आप में दिखाता है कि जुडिशियल सिस्टम जो है वो उतना एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है, उतना सिंसियरली वर्क नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा होता तो कन्विक्शन रेट भी बेटर होता। अगर 100 केसेस में 30% कन्विक्शन है, तो आप सोचिए कि ये 70 और 30 है, तो जो 70% पीपल हैं उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। ये कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें मैकेनिज्म है, जो पुलिस सिस्टम का, जो जुडिशरी का, या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, उन सब का लैकिंग हो सकता है। तो ये इंडिया में है लैकिंग, जो कि रिफ्लेक्ट होता है। निर्भया केस की अगर हम बात करें, तो फास्ट ट्रैक केस था, उसके बावजूद भी मोर देन 7 ईयर लग गया इसमें। तो इट मीन्स कि जो नॉर्मल केसेस है, जो कि फास्ट ट्रैक नहीं है, उस पे 10 से 20 ईयर्स तक लगते हैं, 40 ईयर तक लग जाते हैं। तो जस्टिस कहाँ प्रिवेल हुआ? वहां पर तो विक्टिम ही एक्यूज की तरह बन जाता है, उसको विक्टिम को ही एक्यूज की तरह सारी चीज फेस करनी पड़ती है, जस्टिस नहीं मिलता है उसको। तो ये यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं। बट कुछ हमारी जुडिशरी ने एग्जांपल्स भी पेश किए हैं, बट वो जनरल नहीं है, इन जनरल नहीं है, वो एक्सेप्शनल है। बट एक्सेप्शनल चीज को हम इन जनरल नहीं डिस्क्राइब करके बोल सकते कि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे से लोगों की जस्टिस को प्रिवेल कर रहा है। और इसका सीधा एग्जांपल है कन्विक्शन रेट का बहुत कम होना। Okay, so Yes, Neha. Seema has just explained that though there is a huge gap between the conviction rate and the crimes happening, but do you really think that there could be some lack in the way we deal with the the crimes which are happening? Of course, the judiciary, government, they have their own roles to play, but do we as citizens, as people, as victims at times, do we have some responsibility, and there is a lacking, is there a lacking somewhere in our knowledge, mindset, or anything which could probably improve this? Absolutely, and I think it's universal. I mean, Seema has made very interesting observations about what's happening in India, and but you're asking me for the experience in the UK. I do have a lot to comment on what happens in India, but for the purposes of your question, I'll limit it to what goes on here. As I said earlier, we haven't got it right. We haven't got it absolutely correct. There is the conviction rate for rape crimes, for example, in this country is very low. A case, I'm sure the police do their job collecting the evidence, and but when it actually going to court, prosecutions are extremely successful. Prosecutions are extremely low. And there is, I think, within the communities, regardless, this is a universal problem, lack of awareness. We're fortunate in this country. We've got support available from not just own women organisations, but from the government mechanism, for example, the police, social services, the national health, reporting the matter to your GP. There's loads of signposting, there's loads of campaigns going on. But I don't know whether they're reaching the victims. For example, we've got people who've settled into this country. There may be language problems, cultural problems, not knowing who to reach out. And it is a societal problem, because you have sort of places of worship. They should be a bit more proactive than they are in providing that place pastoral care, in
and signposting these women. But then there's that confidentiality as well. In England, in the UK, it's almost guaranteed. Obviously, I can't say 100%, but there are legislation. If somebody shares information with me, and I'm an organisation which helps women, then I have to assure that the victim that it's all confidential. It won't go any further. So there's it's matching what services are currently available in England to the people who need access to those services. I think that's where the issue is. Not many people are aware that these services, opportunities for them to vent, to access justice, and provide obtain support, are available to them. And I think there need to be, for example, this problem. When you mention that you need to have that proper access to justice, that knowledge of your rights, the knowledge around the rules and the regulations and probably the laws. So first of all, I quickly briefly ask you only the same question. What about the society, as in, though you've already answered that what is lacking, but how to fill that gap within the society as citizens? What can we do to change probably the mindset, or to bring about the change that people are aware of their rights and the better ways to access to justice? Well, in this country, This could we've be in the got context of India, UK, anywhere, just a normal mindset change. So, I think, I mean, we're not 100%, as I keep repeating. We have got quite a bit of support available. For example, the local authority, they need to know, because it affects children. I think what we're talking about women, but it affects children. If they're witnessing crimes, it's going to affect their future life, and it's going to become a vicious circle. So you need to break that circle. And local authorities provide that, police provide that. They provide, they can, if there's a case of domestic violence, they can actually remove the perpetrator, and then the law comes in and they can actually legally remove the perpetrator from the home. Or if it's a serious case where protection, safeguarding issues are concerned, then they remove the children. Now, just in context, I do have experience, limited as it may be, not as much as Seema's experience of the Indian situation. I recently, well, several months ago, without going into too many details, where a woman was a victim of domestic violence. In fact, the whole family joined in. There were a number of generations living in the family, and it was reported to the police. I helped her from my side, as a human rights lawyer, to draw it to the attention of the police. Well, I didn't get an acknowledgement, and the police were listening to the perpetrator and his family because they were slightly well-to-do, and there were other allegations that were made, which I won't go into. But so she was quite isolated, and she's in a rural area. When we with your researchers, I've had this conversation before. In India, they seem to distinguish between, oh, well, that's in the rural area, it doesn't happen in the city, or it's not as much as in the city. And I think that's a mindset. You need to think about women, regardless of whether they're in the rural areas or in the city areas, or what class they are. That should be irrelevant. The fact that they're women and they're human beings, that should take precedent over the fact that they're in rural or no. I mean, I don't, from what I gather, my knowledge and experience so far, that facility doesn't exist in the rural area, and that's where it's needed more. There's no resources for them how to deal with it. They accept it, they tolerate it, they think it's part of being married or being a woman. I don't know. And I think it's breaking that to say, no, you don't have to endure this. And again, more importantly, if they're going through it, their children are witnessing it, how the children might think, well, that's happened in the marriage. And so when they grow up and get married, the cycle continues. It's breaking that mindset to understand that isn't the way out. So it's a vicious circle, like you said.
सीमा जी, जैसे कि जस ने बताया कि ब्यूरोक्रेसी से लेकर फैमिली वैल्यूज से लेकर काफी जगहों पे एज इन काफी प्लेसेस पे बहुत सारा गैप है जो फिल होना चाहिए, राइट? तो आप ऐसा कुछ हमें सजेस्ट कीजिए, स्पेशली फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। डेफिनेटली आपने बहुत करीब से देखा है, आप काफी सारे ऐसे केसेस से डील करती हैं अभी, जो मेजरली या तो गैंग रेप वाले होते हैं या सिमिलर लाइंस के केसेस होते हैं, मैरिटल रेप, गैंग रेप, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह। तो ऐसे क्या स्टेप्स हमारी सोसाइटी में सिटीजन्स को लेने चाहिए, या ऐसी कौन-सी माइंडसेट चेंज की ज़रूरत है कि पॉसिबली इन चीज़ों को एट द ग्रास रूट लेवल अपने आप ही कम कर दें? मैं जस जी के स्टेटमेंट से टोटली एग्री करती हूँ। जो ये लैकिंग है, जो गैप है, इस गैप को जब तक हम फुलफिल नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि सोसाइटी में हम इक्वलिटी की बात करें, क्योंकि जो सोसाइटी ऑलरेडी अनइक्वलिटी पर डिपेंड है उसको हम इक्वल लेवल पे लाने के लिए जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। फर्स्ट, जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन है, उसमें सेक्स एजुकेशन इंडिया में इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है कि जो हमारा बच्चा, जो हमारा किड्स स्कूल जो हैं, जिसमें थर्ड एज ग्रुप के हैं, गर्ल भी है, तो हम इंडिया में अभी क्या कर रहे हैं कि गर्ल्स को एम्पावर्ड कर रहे हैं, उनको फ्री कर रहे हैं, उनको फ्रीडम दे रहे हैं, बट जो मेल पर्सन है उनकी हम काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, उनको अपने साथ जो भी इवेंट, जो भी कैंपेन कर रहे हैं उसमें कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये गैप जो है उसको फिलफिल करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक एजुकेशन से हो सकता है, और गवर्नमेंट के लेवल पे जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उसमें अगर हम विमेन के लिए वो प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वावलंबन, बहुत सारे इंडिया में इस तरीके की प्लानिंग्स चल रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, बट उसमें क्या है कि हम गर्ल्स को लेकर के एक कैंपेन कर देते हैं, बट जो जेंडर अटैक कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है, उसको हम अपने साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये मेल और फीमेल की फाइट हो जाती है यहाँ पर। उनको लगता है कि हमारी जो पावर है, हमारा जो पैट्रियार्की की सिस्टम है, इसको फीमेल चैलेंज कर रही है, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पर मेल को ये रियलाइज कराना है कि फीमेल का भी इक्वल राइट है, और फीमेल को ये हमें एम्पावर्ड करना, ये जब तक ये चीज़ एक साथ नहीं आएगी तब तक मुझे लगता है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो हमें सोसाइटी के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, दोनों लेवल पे ये वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। यस। Seema ji, though both of you have said this just as well, that education is very important, to know our rights, to have that knowledge is important. But हम ये देखते हैं कि even well-educated, well-to-do families में भी इतने सारे इस तरह के क्राइम्स होते हैं women के साथ। पोस्ट मैरिज कुछ भी हो सकता है, डाउरी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिवोर्स के जो केसेस होते हैं, कई बार ये बोल दिया जाता है कि बिकॉज़ द लेडी इज़ टू एम्बिशियस, ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ जो आपने कहा कि जो ऑपोजिट जेंडर है, उन्हें समझना होगा, उन्हें रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। बट बेसिक डे टू डे लाइफ में उन्हें क्या समझना होगा, और इनफैक्ट नॉट जस्ट मेन, वुमेन को भी, चाहे फिर वो हमारे से एक जनरेशन ऊपर की वुमेन हो या मे बी यंगर हो, तो उधर क्या चेंज लाने की ज़रूरत है जो कि एक फिर से कहूँगी ग्रास रूट लेवल पे टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। देखिए, अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो जनरली इंडिया में जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है उसके पीछे जो मैं कारण समझ रही हूँ वो पैट्रियार्की माइंडसेट है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि फीमेल को एम्पावर्ड कर रहे हैं, वो बाहर जॉब करने जा रही है, वो काम करने जा रही है, लेकिन जब वो घर पर आ रही है, और मेल पर्सन भी जा रहा है, बट घर पर ये अभी भी लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि घर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी फीमेल की है। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसकी दोनों इक्वल तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, वो भी फीमेल की। इन सारी चीज़ों की वजह से जब तक एक पर्टिकुलर जेंडर को, मेल को ये रियलाइज नहीं होगा एज ए सोसाइटी
कि जो फीमेल है वो भी इक्वल टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, एनर्जेटिक है, बट उसका टाइम, उसका एनर्जी, उसकी इंटेलिजेंसी, सब कुछ हम कंट्रोल करके मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से रेगुलेट कर रहे हैं। इसमें हम एज ए फैमिली अपना लॉस कर रहे हैं, एज ए सोसाइटी अपना लॉस कर रहे हैं, एज ए कंट्री अपना लॉस कर रहे हैं। और अगर बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे, जैसे हमारी अभी रिसेंटली देखे मलाला यूसुफ मलाला जो पाकिस्तान से थी, वो तालिबान ने अटैक किया, लेकिन वो आज एजुकेशन को लेकर के ऑल ओवर वर्ल्ड में कैंपेन कर रही हैं। अभी रिसेंटली क्वेटा थर्ड, ये गर्ल्स आगे आ रहे हों, ये जेन्युइनली इन्वायरमेंट, एजुकेशन, बेसिक ह्यूमन राइट पे काम कर रहे हैं। बट जो पैट्रियाटिक सिस्टम पहले से बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, और वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि जो चीज़ है वो परफेक्ट है। अगर फीमेल उसमें मॉडिफिकेशन करना चाह रही है, वो नहीं करने देते हैं। तो इसमें मेल को समझना पड़ेगा, और फीमेल को भी अगर मेल कंट्रोल कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो अपनी एक्सेप्टेंस के लिए मे भी ऐसा भी हो कि अपने जो उनके रिलेशन हैं उनको ब्रेक करना पड़े, उनको सेपरेट होना पड़े, क्योंकि भारत एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है। पर बेसिक जो बात है इंडिया में हो रही है कि फीमेल को एम्पावर्ड कर दो, लेकिन डॉवरी जैसे एक बहुत ही कस्टम जो कहेंगे बुराई है, उसके वजह से अभी भी फीमेल का मर्डर कर दिया जाता है। तो ये हम कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी वाला काम कर रहे हैं, हमें ऑनेस्टली वर्क करने की जरूरत है। यस। Say, I would like to move on to just this hypocrisy. I believe it's geography agnostic. It would be happening out there in other countries as well, right? But what we would want to know is that in the lives of women across the board, across the geographies, what is that role of other women? What kind of support could they extend so that they can probably improve the lives of their own sisters or daughters or daughter-in-laws even better? So, what are your views on that? Well, again, it's back to education and respect, regardless of whether they're women or children or men, respecting them as a human being and viewing them as a powerful resource. India, with greatest respect, doesn't appear to be doing that. You've got a massive population, 1 billion people plus, and obviously at least half must be women, female, and that's an extremely valuable resource. And you must have some Nobel Prize winners, potential winners there, see it as a resource, as a valuable resource that you need. They need to be in the workforce. They need to be role models. They need to mentor each other, create. You can't, as I said earlier, you can't wait for the government to act. They've got to be other organisations who can provide those opportunities. I don't know what it's like to provide work experience in India for not just sort of the educated, but other people who are marginalised, and not dividing them. Oh well, because they're rural, they're so and we're in the suburbs or whatever. That distinction shouldn't be done. And I think it's valuing that what they bring. They've got. Look at what women do. They work in the house, they work outside, they bear children, look after children, and so can you imagine that if that was translated? So they're directors and managers in their own homes. Can you imagine if that valuable resource was available in the workplace? They could add that. You need women's view, and in order to compete in the world market in terms of trade. You need to reflect that. It's no good saying, "Oh, we're a democracy and we're the largest democracy in the world," but it's got to be reflected. The people you converse with, deal with, educate with, and I think they should. Academic institutions such as universities, colleges, and schools. It should start there. They shouldn't wait to go into the workforce. That respect, that education. For example. Technology is a wonderful thing. The work I do, the human rights work, I'm absolutely amazed at how well women operate. Well, men and women, sometimes not educated people, they use it for
you're saving lives. That's not an exaggeration. If you're working abroad, you know, you have some sort of emergency, and I don't mean somebody's dying or whatever. It could be that. It could be you're facing a situation where you're being beaten up or exploited. You can access people. Can you imagine in the 70s when we didn't have mobile phones, 70s, 80s, and 90s, how people suffered? They died, they were hurt. That you know that their lives weren't available. Now, very briefly, I recently dealt with a lady who was rescued from Malaysia. She was enslaved, very educated, and sorry. Plus, yeah, we are so interested in the discussion that we're having, but I would like to apologize. We will have to wind up because the time for the show is just getting over now. But one final message that all three of us would like to give to our audience is that life is not about waiting for the storms to pass. It is about learning how to dance in the wildest of the rain. So please, ladies and gentlemen, keep helping each other, keep living your lives, let others live as well, and please reduce the empathy towards every gender. Gender agnostic attitude would be the best. So here's me, Sneha, signing off from Nari to Narayani, presented by Inspiring Indian Women and MATV. Thanks a lot to both our guests. Thanks a lot, Seema ji. Thanks a lot, Chas. Thank you, Sneha. Thank you, Seema. Thank you so much. I've got nothing to eat. Nothing. Hold on, I can do something.